सांस लेने का टाइम मिला। ओपनिंग सेरेमनी कल ओपनिंग सेरेमनी की वजह से शायद ये हो गया। वो डिफरेंट सेशन होता है, पूरा फॉर्मल होता है और टीचिंग सेशन। कोशिश ये है कि because it's a training, it's not really the teaching. थोड़ा सा क्या नाइस किया पानी का सवाल कोई बात आज ठीक है वैसे भी बेहतर होता है, लेकिन आज बहुत बेहतर। कुछ लोग इंग्लिश बहुत ज्यादा पसंद आता है, स्पेशली इंग्लिश। कुछ लोग तो टेबल के पास ही बैठे थे और नहीं हमारी मैसेज भी कुछ लोग थे। अच्छा मैं ठीक है। सारे पठान है तो बस खाते पीते कराने से सारे बाकी शहरों में लोगों के पास हैपर में और पेशावर में this is the only thing that you can do with family. Food is the only entertainment that you have, fortunately or unfortunately. So आप जब बाहर होते हैं when you are upset or you have anxiety, depression, whatever phase you are, you don't eat for days. हमारे यहाँ तो ज़्यादा खपाओ ज़्यादा खाते हैं। कुछ और करें ना खाएं तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, और कुछ और हरकतें भी बंदा कर सकता है लेकिन यहाँ नहीं कर सकता, इसलिए खाना है। Okay, let's start with publications. Now, how many of you have already published anything like a poem, a story, papers? Great. How many? 19. 19. Well, you should be here then. You can tell us that. But you see, you might say, or this gentleman or some others, I mean, what's the big deal about it? How to publish. We know how to publish. Papers are but the thing, those who have been through the process, they actually know that it's not like a course that you attend, take some notes, check some websites, and then you're ready for that. It's a continuous process. That's why those of you who have done PhDs, for example, I mean, if PhD or this research was that simple like any other degree, you don't study hardly, you hardly study any courses, but still you spend 4, 5, 6 years, because this whole process is important. Now, while we discuss that, I'll give my story also, because I am old and I am one of the first people who went for my PhD back in 2003. काफी पुरानी बात है, ठीक है, almost 20 years ago, I got the opportunity. And so I'll share some experiences, and I would like to hear some of you, that where does it fit, supplement hota hai, your experiences, because again, it's all about experiences. We are lucky, you are lucky that you are getting all the information. Now you have a lot of information about research, about publications, about journals, हम discuss करेंगे बाद में. But back in 2003, situation was very different. Internet was not that common. No Facebook, no YouTube, no such kind of thing. And above all, we had no idea what research is. They just throw us there, you get a scholarship, you're excited, you're gone there. As if, somebody asked me how to maybe read a couple of books, and there's something called research paper, we read it, and then we come up with something. So it was very casual. I thought it's going to be easy, but it wasn't. So let's see. First and foremost, research paper, everybody knows, what is a research article, which explains what we have learned after exploring a topic, or tries to convince the readers that the writer's argument is valid or at least deserves serious consideration, contributes to the existing body of knowledge. It's not merely collection of facts or figures on the topic, or reporting what others have written about it. It is actually utilizing, synthesizing, whatever relevant information to create something of your own. Now, this is bookish kind of definitions. But as I said, we didn't have any information, I never had seen the research paper in my life. So for me, going there and then being exposed to a culture where all your colleagues are working,
and then you are the odd one out because you have no idea what is happening around you. So you're asking those stupid questions, from your supervisor about topic. So first thing she asked, what is your topic? I said, I don't know. It's not okay. Let me rephrase that. What is your area? I said, well, I have so many areas I've studied. She had to rephrase again. What is your favorite subject? That is the beginning, and then, okay, I have computer networks and computer architecture. This is my area. All right, let's start with that. And she's giving me 3-4 books. Come back in 2 months' time once you have read through that. So that process, that's what I'm telling you. For learning by doing की जो हमने बात की थी. This is exactly what happened with me. The question, why publish? Why do you want to publish? Share the knowledge. To share the knowledge with people, with other people, which you learn, you gain. Let other people acknowledge your work. So people can acknowledge your work, so you become known to people. To solve a problem. That is basically writing about research. That is doing research. You're solving a problem. This topic is not about writing paper, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, क्या structure होना चाहिए. No, we're talking about the publishing part, completely publishing part. यानी कि assume कि somewhat हमने research कर लिया, अब हम अगले step पे जा रहे हैं. Know the people about the solution of a specific problem, or the policy makers of any country or business or any organization to let them know about the solution of. So letting the people know about the story. What have you learned? What have you done? What have you unearthed something new, either discovered or invented? Whatever. The requirement for different academic positions. Okay, now that is another thing. So, for example, one is the philosophical side, जो हम सारे बातें हैं, कुछ बातें हम करते हैं ना. Curiosity, zeal for knowledge, because I want to learn, I do research, I want to learn. Add to the existing body of knowledge, a very typical textbook definition, ठीक है? Or considered among those who are authority in the field. Because there comes a time I have written 200 papers, I have written a couple of books. So I am now somebody who people know. So now they know me because of my publications. Okay? But there is a pragmatic approach also. The gentleman said. We are living in Pakistan. Okay, ji? आप सब teachers हैं. You know that in order to go up the ladder, you need publications. It doesn't matter how good a teacher you are. You can be an amazing teacher. You can be an amazing researcher. But you cannot grow up the ladder unless you have published. And not only published, but a certain number, of publications. And in a certain time, exactly. Not only publications, but in a certain time. So these are those conditions, So although we know that this is the real reason why people publish, why people do research, but pragmatically, realistically, maybe नहीं होता तो let's this is the point where we can argue. And it's more compelling than the other one. It's more Compelling than the other one. compelling. This is what drives you to publish, right? Yes. अच्छी बात. At the same time, you are developing yourself and you are registering your work with your name. ठीक है. That lady said one thing जो अभी हम वो कहते हैं hold on to that thought publication in a certain amount of time. एक constraint है जिसको आगे हम देखते हैं कि यार हाँ problem आता है. Writing a paper. So what is important in writing a paper? Again, I share. So after a year, I had so-called read something and I thought I am really good in writing because my English is so good. I consider myself, I can speak, I can talk to people, I understand, I'm perfect. My writing skills are amazing. This is my thing. So I get the opportunity, there is a conference, So I was asked to submit a paper, write a paper, a short paper, okay? I did some initial work, I did some experiments, basic experiments.
I got some rudimentary results. So I wrote a 4-page paper and very confidently I gave it to the supervisor. And after 2 days, the printed paper जो है वो सारा red. This printed black, which was all red. And I was like, what the hell happened? And she was surprised that, what are you doing? You wrote as if you were talking to somebody. So yes, you can talk, you can speak, you cannot write. It's a big different skill. And where does that skill come from? So what is the first thing that one should do? Reading. Exactly. Or the way, I learned the hard way. So I say the first thing is reading, the second thing is reading. And for me, reading. Because the more you read, the more you learn. Again, doing research is one thing. You can outsource it. You know some software, you know the mechanisms, you know the methodologies, get the data, do something with it, find some results, fine. The main thing is to present yourself. So जिस तरह बोलना एक art है, उसी तरह लिखना भी एक art. And that doesn't come from reading a book or two. It comes from reading the relevant material. I always say those of you who like books, for example, thriller books. I got a Christie book for today. बहुत सी किताबों के बाद you are able to sometimes see when a new movie is there or when a new book is, what is happening. You know how the characters are playing, तो आप guessing करते हैं. तो कई दफा ठीक हो जाता है because you have read about that. एक trend है. So this is what you learn from papers, So as I said, reading is the first and foremost important thing. You have to read a lot. Sometimes you read, I told you, when I was exposed, I had to print 40, 50 pages, papers. Luckily, I had a free printer. Back in 2003, 4, I'm talking about. These things were not very common and they were expensive. And, tablets नहीं थे, phone नहीं थे कि उस पर पढ़ लेते, laptops हमारे पास available नहीं थे, computers थे. So the thing is, the point was how to read, what to read, So this was something with the passage of time. So it took me a couple of years to actually reach that stage where I could confidently say, now I'm able to write, I'm not talking to somebody, but I'm actually writing something. Research articles, and you all know about them. Original research article जो research paper होता है आपका, ठीक है, जिसमें आपके तमाम segments होते हैं, आप literature डालते हैं, आप उसमें methodology डालते हैं, अपना model डालते हैं, experiments डालते हैं, discussion करते हैं, journal paper. You are extending that body of knowledge a little bit further, Review articles, very important. In some areas, they're very important. In computer science, for example, they're not that important, ठीक है? लेकिन बाकी जो historical sciences हैं, philosophy, humanities में बहुत value करते हैं, क्योंकि उनका सारा जो paradigm है उसके ऊपर based करता है. Case studies, you already know, they are mostly used in business research, ठीक है? And then in medical research, ठीक है? ये दो fields हैं जहाँ पे case studies use होती है, computer science में नहीं होती है, physics में कहीं नहीं होती है, chemistry में नहीं होती है, ठीक है? ये दो fields में आपके पास case studies होती है. Book reviews हैं और opinions हैं, commentaries. Heard about conferences? So a conference is what? Ever presented a paper in a conference? Which conference? Locally, internationally? Locally. So what is the difference? What do you think in that presentation of a conference and then you've written so many papers? I think conference you had, it was a small paper, a mini version of that paper published already. Okay. Compared to a journal paper which is lengthy, which is, which has a lot of material. 5 pages paper. 4 to 5 pages. Okay. So, आपके पास technical reports होती है companies में, workshop papers होते हैं, conferences होते हैं, journals होते हैं. मैंने उसको तरीके से किया कि timeliness और reliability, ठीक है ना? Timeliness से क्या मुराद है कि fast हो, relatively fast है, so on, ठीक है? अब problem ये है, areas पर depend करता है. Again, it is interesting that in computer sciences, we prefer conferences than journal papers. और उसकी एक reason है, very important reason है. अभी model change हो गया again. So conferences जैसे इन्होंने कहा, conference में ये होता है कि यार
You write a paper, you did something, अभी जैसे मैंने बात किया, I did something, I got some preliminary results, I want to present. The benefit of a conference is what? It's just like this. आप 10, 15, 20, 50 लोग बैठे हैं, I'm presenting my work, ठीक है? It is being evaluated right away. So all of the experts are looking at it and they are pointing errors or problems or questions, and then you are getting the data. ठीक है? So conference का काम जो है या पेपर जो है वो बड़ा rapid review दे देता है आपको कि यार आपका काम किस स्टेज पे है, पहली बात. दूसरी बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, अभी मुझे नहीं पता, अभी मेरा ख्याल है चेंज हो गया मॉडल, बट बैक इन दोज डेज पेशावर यूनिवर्सिटी हैड अ पॉलिसी, और वो पॉलिसी ये थी, व्हेन यू रजिस्टर फॉर अ पीएचडी प्रोग्राम, which means that at the end of that you will submit a thesis. Now that thesis has to be original. Every thesis has to be original, but what does it mean original? It means that you cannot do any publication before the thesis is defended. Got my point? So आपका 4-5 साल का period है suppose. आपने उसमें जो भी research की है, at the end of that you are going to make that book, and then you are going to make your public defense. You're done. Your defense is done, you're awarded a degree. Now you can do publications from it. So this was what I knew when I went there. So this was something in my mind. I had no idea. I mean, nobody's going to publish. I thought, well, whenever it finishes, we will think about it. But within a year, I was asked to publish my work or present my work in a conference. And that was the question that was, pinching me at that time. If I do that. And the thing that I realized was I was told that, the problem is that if you are thinking something, working on something, how do you know that nobody else is also working on that? So in order to grab your place in that community, in order to get that recognition from the market, you have to publish the sooner you get your work. So you have, yes, no journal is going to take rudimentary work. So go to a conference. IEEE की conference होती है, ACM होती है, they record your data. So your paper has been presented, it comes on record. Now nobody can claim कि यार ये मैंने किया हुआ है, ठीक है ना? अगर कोई करता भी है तो आपके काम को कम से कम आगे ले जाएगा. कल को आप नहीं भी करते तो somebody else can take that forward. You got my point? So conferences were fast. On the other hand, problem journal के साथ क्या था? IEEE journals are very computer science में बड़े, quality journals होते हैं. We put a paper in 2007 in transactions, networking transactions. I finished my work in 2008. I came back to Pakistan. That paper was published in August 2009. Submission was in 2007. Publication was in 2009. Okay? 2 years the difference. And now you guys, if you were there and interested in my work, you would have think, wow, it's a new paper. 2009, that's the latest paper. In fact, the work is 2 years old at least. That was another problem, जो कि journals के साथ. So I mean, these are the constraints, जो researchers को सामने रखनी पड़ती है. How about selecting a journal? How do you select a journal? Or why do you select a journal? First question is journal को पहले से अगर मैं select करता हूँ या publication से पहले, publication pages से पहले, I just go through. Why should I select a journal first time? Authenticity. The area. Authenticity. Authentic, हाँ वो है, लेकिन मतलब हम कहते हैं ना यार कौन सी जगह पे publish करना चाहिए. देखना कि genuine है, relevant. Genuinity तो चलो वो तो एक बड़ी वो है ना. Subject relevant. Relevance हमने देखनी है, ठीक है? कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ तो फिट कहाँ पे, ठीक है ना? मेरा एरिया जो है उसका जर्नल कौन सा है, और क्या वजह हो सकती है? आप HRS देखेंगे या देखा होगा आप देखेंगे दुनिया की रैंकिंग कहीं और जा रही है, हमारी जो है Relevant literature can be extracted. जी Relevant literature from that journal can be extracted. देखिए एक तो हो गया. According to requirement of that particular journal. Exactly. This is very important.
हमें एरिया भी देखना है, यार इट फिट्स माय एरिया, माय पेपर वुड यू नो पीपल विल रीड दैट, उस एरिया के हैं। और दूसरा जो उसकी जो 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 फॉर्मेटिंग है, उसका जो स्टाइल है, उसको भी फॉलो करना है, ठीक है। अभी हमारे पास बहुत से सॉफ्टवेयर आ गए जो फैसिलिटेट करते हैं, बट देयर आर सर्टेन जर्नल्स हु हैव अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड हेडिंग्स, इवन दे हैव गिवन कि यार ये हेडिंग होनी चाहिए। आप फिर उसके मुताबिक अपनी फॉर्मेटिंग, अपनी राइटिंग करते हैं कि यार किस तरीके से एडजस्ट करना है चीजों को, ठीक है ना। तो ऑडियंस कौन सी है, ठीक है, who are the people who are publishing in those journals, you know, so ये वही लोग हैं जिनको मैं पढ़ता हूं, तो इसका मतलब है they will read my paper because I also need citations, मुझे भी लोगों को पढ़ना है, ठीक है, मैं उनको पढ़ता हूं, they should also read my paper। क्वालिटी जो आपने बात की, ठीक है, एक तो ठीक है, क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है, अभी बहुत प्रॉब्लम है, पहले बहुत अच्छी थी जमाने में, जो है ना, पुराने जमाने की बात, कंप्यूटर साइंस में 10 साल पुरानी ऐसी है जैसे 1 decade old, you know, so I am a decade old person, बल्कि 2 decades old person। उस जमाने में we had very limited options, so in computer science we only had IEEE and ACM, 2 organizations जो conferences भी करती थी और journals भी होते थे, a lot of journals they had, so we would just roam around, उसी में करते थे, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, एक तो फेक जर्नल है, वो हम जर्नल्स के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, कितनी वेबसाइट्स हैं हमारे पास, कितने हैं, थाउजेंड्स ऑफ फेक जर्नल्स हैं हमारे पास, क्या कहते हैं, dubious किस्म के journals, but quality itself is now a very important element। A journal may not be a fake journal or a dubious journal, but still reputation matters, you know। और कैसे पता चलता है reputation का किसी journal में? पाकिस्तान छोड़ो, कैटेगरी को छोड़ो, वो बड़ा कोई अलग इशू है सर, वो Citation. इम्पैक्ट फैक्टर एक चीज है, citation impact factor भी हम डिस्कस करेंगे आई थिंक टुमारो इंशाल्लाह, ठीक है ना। बट साइटेशन इज समथिंग, गूगल स्कॉलर पे कभी जाओ, उस पेपर को डालो, आपको पता चल जाएगा कितनी दफा साइट हुआ है, ठीक है ना। अपना पेपर डालो, आपको अपना पता चल जाएगा कितनी दफा साइट हुआ है, वहीं से हमें समझ आएगा कि भाई जो मैं आपको कहता हूँ कंप्यूटर साइंस के, हमारे कंप्यूटर साइंस के कॉन्फ्रेंसेस के पेपर हैव गॉटन 500 to 700 citations, you know, which means they are valuable, उनके इम्पैक्ट होते हैं, उन कॉन्फ्रेंसेस के इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं, बट इट्स पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस इन कंप्यूटर साइंस एंड मेडिकल साइंस, ठीक है, इन दो इंडेक्सिंग है। आपने इम्पैक्ट फैक्टर की बात की है, ठीक है, वेब ऑफ साइंस का जो डेरिवेट है वो इम्पैक्ट फैक्टर देता है। अनदर पॉलिटिकल थिंग नाउ बिकमिंग पॉलिटिकल, ऑक्यूपाइंग ओपन एक्सेस और सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, ठीक है। ये ओपन एक्सेस एक नई चीज आई है, जो गड़बड़ शुरू हुई है क्वालिटी की, ये बेसिकली ओपन एक्सेस। It doesn't mean that open access all journals are bad. No, but because of that model, because of that thing that I told you, 2007 का paper 2009 में आ रहा है, we want quick results. So some organizations started those, you know, journals जिनकी reputation अच्छी नहीं है, लेकिन publication है. And we just need publication. Trustworthy publisher. We still have those Elsevier है हमारे पास, Springer है, ठीक है, Academy of Management है। अभी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको कहा, इम्पोर्टेंट चीज क्या है, रीडिंग, ठीक है ना। एंड academic writing itself is an art, you know, you need to learn about it. There's so many books. I would suggest consult this book, very simple but very effective, you know. Even our master and PhD students sometimes listen in computer science, क्योंकि हमारे कंप्यूटर वालों के साथ थोड़ा ज्यादा मसला होता है लिखने का। तो it's a good book, you know, online भी available है आपको। You can use language analytics services, ठीक है। Remember, quality की भी हमने बात की। If it is a quality journal like Elsevier, like Springer, if your English is not correct, it will be sent back within a couple of days. They will not even go into the science of your work, ठीक है ना। So on their websites, आप Elsevier की वेबसाइट पे जाएं, Springer पे जाएं, उनके पास पेड सर्विसेज हैं जो आपकी लैंग्वेज ऑथरिंग सर्विसेज हैं जो आपको हेल्प करती हैं, बट दे वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। जैसे कल हमने बात की थी सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, आपको एमएस ऑफिस भी फैसिलिटेट करता है, और एक किसी ने बताया ब्यूटीफुल प्रोग्राम इंस्टॉल कर ले, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, वो आपको सजेशंस देगा, आपकी इंग्लिश को बहुत बेहतर बना।
वर्ड्स आपको यूज करने हैं, राइट क्लिक करते हैं, synonyms आ जाते हैं, ठीक है, आप डिफरेंट वर्ड्स उठा सकते हैं. So you've got lots of options. Do use them. Quality journal, this is the first and foremost thing they see. If that is not up to the mark, your paper is going to be rejected. Do that also anti-plagiarism software, you know. Well, the word anti-plagiarism is not the right word. Basically, plagiarism is a very, you know, vast thing. But I would say authenticate जो है, Turnitin का part है. Similarity index, but that is what it does, which is not bad. So Turnitin is not similarity. ये याद रखें. Turnitin का जो सॉफ्टवेयर है ना, itself जो वेब सर्विस है, उसमें बहुत सी चीजें हैं. अंग्रेजी की सर्विस भी देता है, peer review भी देता है, rubrics भी देता है, बहुत सी चीजें हैं. You guys have a Turnitin access from your universities. I'm using it very rigorously with students, you know, right from bachelor's up to masters. उसमें बहुत आप उसमें ये जो collaborative work की हम बात करते हैं ना, आप assignments जो है वो distribute कर सकते हैं. आपसे मैंने assignment ली, फिर मैंने peers को दे दी, वो mark करते हैं, वो सारी की सारी आपको नजर आती है और आप उनको further mark कर सकते हैं. So do that, you know, कोई ऐसा ना हो, कोई बात होता है कि हमारा literature वगैरह का जो part है वो उसमें थोड़ी चीजें ज्यादा हो जाती है, ठीक है. So it doesn't look good हम इस तरीके से देखें. आपके और मेरे पास अगर एक सर्विस है, तो इन जर्नल्स के पास तो डेफिनेटली सर्विस होगी, ठीक है. It's all the guidelines, you know, whatever you want, they are available on the journal's website. जिस जर्नल पे जा रहे हो, जब आपने सिलेक्शन की बात की ना शुरू में, तो आपने इसी भी किया कि यार उसकी जो सबमिशन गाइडलाइन है उसको पढ़ लो कि यार वो रिक्वायरमेंट क्या मांगता है, ठीक है ना. Because some journals, PFJ एक जर्नल है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का ओपन एक्सेस है, बट उसकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि यार टेबल्स जो हैं वो या फिगर जो है खास उसमें बने हों, खास साइज के बने हों और उसमें सेपरेटली अपलोड हो, ठीक है. सो डिपेंड करता है. इफेक्टिव कवर लेटर, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कवर लेटर इज जैसे किसी एप्लीकेशन के साथ आप देते हैं, सीवी के साथ देते हैं, कवर लेटर, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड, 2-4 मेजर पॉइंट्स. दिस इज व्हाट you cover. It's not your abstract, it's not your introduction, it's about you and your work. So just to convince the editor, you know, why you are doing that. And importantly, conflict of interest. Now, what is conflict of interest in a research paper? Review होगा ना. अब conflict of interest, this gentleman and I, we are working in the same area. Supposedly, ठीक है? We are both well known, presumably. We are working in the same area, but we have different methods. He does something, I do something else in the same area. So when he's submitting, he knows I am the rival because I don't agree with his methods. So he can mention that, you know, Mr. Muhammad Ali is my conflict of interest. So at least I should not be consulted on that paper. That's my point. So ये आपने जरूर mention कल को फिर आप नहीं कह सकते पेपर उसने मैंने देखा मैंने कहा यार ये तो वही है, ठीक है, नहीं करता. So आप mention करें, एक नाम, 2 नाम, 3 नाम, जो भी है, ऐसा ना 20 नाम दे दें, फिर हो जाएगा. बट एक 2-3 लोग होंगे जो जिनके साथ शायद आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आप डेफिनेटली मेंशन करें. These people I have conflict of interest, so they will not send it to those people. ठीक है. Source of funding जिनको होती है डेफिनेटली मेंशन करना होता है, ठीक है. जब मैं वहां पे था, फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंस पेपर करना होता था, तो वी हैड टू मेंशन दैट IEEE सपोर्टेड, HEC सपोर्टेड वर्क बिकॉज हायर एजुकेशन कमीशन वाज फंडिंग अस, ठीक है ना. तो वो आपको बताना होता है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन इसमें एक्नॉलेज करता है. समथिंग व्हिच इज very important, but you will see that not many people do that. और ये मैं चाह रहा हूँ कि हम जरा वो करें. पहली बात तो ठीक है, वो तो ये चीज़ है, डेटा फैब्रिकेशन जो है ना, when you did not actually do the study but fake the data, or falsification means researcher did the experiment but then changed some of the data. ये 2 तरह के problems आते हैं. People don't think that this is common, but I can tell you that there are, in computer science, we've seen research where 50 to 60% of data was fake, published papers, you know. So it used to be a very rampant problem. That's why वो reproducibility की बात होती है. That's why data की बात होती है कि आपका available हो. Plagiarism. Now, what is plagiarism? It is not just copying somebody's ideas. सारी बातें. Copying even one sentence from someone's manuscript as it is without acknowledging.
or even one of your own that has previously been published. So this is a very tricky thing. हमने कॉन्फ्रेंस की बात की ना, आपने एक पेपर कॉन्फ्रेंस में किया, फिर वो बड़ा अच्छा हो गया, अब आप उसको जर्नल में भेजते हैं, तो आप कहते हैं यार मैंने और क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, पहले मैंने थोड़े किए था, मैंने ज्यादा कर दिए, काम तो सेम है, तो मैं वो 4-6 पेज और लगा दूंगा उसमें, और मैंने पहले IEEE की कॉन्फ्रेंस में किया था, अब मैं भेज रहा हूँ एल्सेवियर जर्नल। You can't do that. Why? Because the first paper is now copyrighted by the IEEE organization. वो उसकी कॉपीराइट बन गया, आप अपने काम को रिफ्रेश करके लिखें, बात समझ ले, इसको हम सेल्फ-प्लेजरिज्म में आ जाते हैं, ठीक है ना। अलबत्ता अगर आप सेम ऑर्गेनाइजेशन को भेज रहे हैं, IEEE का कॉन्फ्रेंस थी, उसी की ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप उसमें मेंशन कर देते हैं कि फलां टाइम पे ये पब्लिश हुआ था, प्रेजेंट हुआ था, अब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो दैट इज एक्सेप्टेड। ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुई तो कॉपीराइट चेंज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मेरा ख्याल है जो जिन्होंने किया होगा, आई डोंट नो, ये हमने बहुत ट्राई किया हुआ है, ये बात में नहीं करना चाहिए, multiple submissions. Again, you see, now we come to a point, you know, publication is one thing. The problem with us compared to the Western world is, I was visiting a conference, autumn conference in Philadelphia. Do you guys know tenure track system? PTS, का पता है? ये HEC Tenure track system, yes, HEC का system है, employment registration. So I was there in that conference, so professors were talking, you know, so one of the professors, I told him कि यार हमारा ये system है और उसमें आपको प्रोफेसर मतलब आपको ले जाते हैं 6 years period time, you have to produce 10 research papers, otherwise you're gone, you're finished. And I remember this guy was like, you must be a genius, you know, that right after your PhD, you can write 10 good papers, published in journals, and then get promotion. You're doing because the organization is telling us. It took me 5 years after PhD to come up with the first good publication in a good journal. How many projects have you written? How much funding have you gotten? I said, well, only one. The problem is, in different universities in the West, they have a package. They don't look at the number. This is the quantity of जो आप में से quantitative और qualitative वाले हैं ना, वो quality का number मतलब समझ आता है कि यार ये overall package है, कितनी teaching की है, कितने paper लिखे, कहाँ conferences में गए हो, कितनी funding दी है, क्या supervision की है, maybe 2 papers are enough, maybe 10 are not enough. So multiple submissions, देखिए ये international website अपने ऊपर डाल रहा है, अपनी इस पे डाल रहा है. Unethical to submit the same manuscript to more than one journal at the same time. So as I said, many people have done that because of the time constraint. I don't know ये 6 महीने बाद accept होगा क्या नहीं. So we just do, you know, submit to 2-3 different places. और उसमें तरीके होते हैं जो कि मतलब आप इस पकड़े भी ना जाएं, लेकिन ज़्यादातर मसला ये होता है जब हम केयरलेस होते हैं तो आपको हमेशा एडिटोरियल को जो कमेंटी है उसको देखना पड़ता है. अगर सेम नाम है तो फिर अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसको दोनों पेपर मिल जाएंगे तो उधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है. But it's unethical. हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि don't do that. ठीक है? Although we are under pressure, but still don't do that. Redundant publications. This means publishing very similar manuscripts based on the same experiments. Language change कर देते हैं, वही experiment उठाते हैं दूसरे जर्नल भेज देते हैं. काम वही किया होता है, फिर कुछ इधर उधर कर दिया, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल थोड़ा सा बीच में चेंज कर दिया, मेरा एक नया पेपर बन गया, ठीक है. और improper author contribution मेरा ख्याल है सबको पता है. What does it mean? All listed authors must have made a significant contribution to the paper. समझ आ रही है? Do not give authorship to those who did not contribute. That's the right answer. Somebody will be sick. That's the right answer. So the problem is with numbering, na? When you are required to publish so much papers, you have to. This is Have the gift because you will get the gift at some point also. This is Money I from think the There are many problems also there. money problem. Sir, as a young researcher, जब आपको 60,000, 80,000 a publication के लिए देने होते हैं, then you cannot arrange that amount. Then आप
किसी ना किसी को कहते हैं कि यार मैं नाम डाल दूंगा बट यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ताकि ये इस कैटेगरी के जर्नल में पब्लिश हो जाए. बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसे वाला बहुत अच्छा Sir, आपको how much is the piece of, sir, you have been working in research for the past many years. How much is the general fees for Mindawi Journal? I have done that, I have a big Right? How much is for elsewhere? We cannot afford it. $3,000 तक charges हो रहे हैं और आजकल तो That's dollar what I'm trying to say. That's what I'm trying to say. So, ये देखिए वही बात है, that's why unfortunately publication for us, and again you will get your 10, 15, 20, whatever, you know. The problem is you take these papers and go abroad to a foreign university and see what happens with it. Trust me, do that, try that. So, We are actually the number game. yeah, We have the system. That's because of the system. We have forgot the quality. We are just focusing on the quantity. quantity, और वो भी within a certain amount of time. मैंने आपको टेन्योर ट्रैक की इसलिए मिसाल दी क्योंकि जो नॉन टेन्योर ट्रैक के चले वो तो ठीक है, अगर नहीं करता बैठे रहो. टेन्योर ट्रैक में तो 6 साल के अंदर आपको करना है, Sir, आप नहीं करते तो कैसा है? मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बताता हूँ. मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो कि 3-4 डिफरेंट रिसर्च पेपर्स को इकट्ठा करता है ऑफ सेम टॉपिक, without doing any analysis, without doing any kind of just rephrase the paper and change the figures in the tables and graphs, and that's published. ये आप तो नहीं है. Very I'll tell you now about that, you know, peer review में क्या हम एक चीज देखेंगे आपको. Like, sir, like, आपको पता होगा कि जितने भी आप अच्छे क्वालिटी जर्नल्स में जब आप पेपर बेचते हैं, so they demand you for the data कि आपने जो एनालिसिस किया है उसको data दें. यही मैंने बात की थी. लेकिन जो लोकल जर्नल्स हैं जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, वो डेटा डिमांड ही नहीं करते, इसकी वजह से ऑथेंटिसिटी ऑफ योर टेस्ट्स आर नॉट बीइंग वेरीफाइड. Then one of our colleagues, she's PhD. She's on TTS, so she always tries to publish her papers. So she was saying that now there is another business that has been started in different countries and in journals. They asked you to first proofread your work from their partner organization or from someone they have hired. So then you will have to pay for that proofreading first, and then you will have to pay for that paper again, publish in that journal. So they have started a sideline business along with their journey. Kind of a paper from that particular. Similar situation मेरे साथ हुई है last week. लाइब्रेरी साइंसेस का एक जर्नल है, सोशल नेटवर्किंग साइटेशन पे मैंने काम किया है, 3 दफा सबमिट किया है. रिव्यू आने के बाद हर दफा वो कहते हैं जी इसकी प्रूफ रीड करें. एंड व्हाट आई डिड कि मैंने उन्हीं के जर्नल से 5 रेफरेंस डाल के सबमिट किया है, चल पड़ा. साइटेशन सेल्फ साइटेशन जर्नल. ये प्रॉब्लम जो तुम्हारी डालते हो और वो जाता है जर्नल में, वो फिर साल बाद जो जब इम्पैक्ट फैक्टर क्रिएट होता है, यू नो, वो निकलता है तो जर्नल का नंबर पड़ता है. सो दिस इज बेसिकली people who are running these journals, whether it's Elsevier, Springer, they're not academics themselves. These are organizations, these are companies, they're not universities, colleges or government. They are actually running businesses. They are businesses, They're exactly. businesses. And business का सबसे main आप सबसे ज़्यादा होता है is to make money, you know. Profit. Yeah, profit बनाना उससे. So how can you expect something, you know? पाकिस्तान में जो जर्नल कल्चर लाया गया था ना HEC ने, उसका मकसद यही था कि यार यूनिवर्सिटीज चलाएं ताकि बिजनेस ना बने, लेकिन कुछ और हो गया यहाँ पे. सर ये पूरी दुनिया में स्टेट में भी पब्लिश हो रहे हैं सर, इंडियन भी बहुत ज्यादा है. जर्नल्स में आपको दिखाऊं तो सबसे बड़े गड़बड़ कर से आ रहे हैं. फर्स्ट सेशन में डॉक्टर मोहसिन ने कहा था, आई वुड नॉट लाइक टू से प्रोडक्ट टू माय स्टूडेंट्स, बट दिस इज द प्रोडक्ट. वी आर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट because we are earning, but we ourselves, because we're teachers, the problem is we are ourselves under pressure. I think most of you would have realized that it has affected your teaching. Yes, this pressure of research, this pressure of doing things, writing papers, publishing as fast as possible, it has affected teaching quality. Because let's be honest, we used to be good teachers because this is what we used to do. That's why students graduating with bachelor's
4 year बैचलर्स या हमारे वक्त जमाने में 2 years होता था, MSc होता था. अभी क्या है? We bring all the research down to their level, you know. We put them to work, do something. It's benefiting us rather than them, you know. तो वो जो marketability है, वो affect होती है. So I was reading an article that is one of the university that is in KPP, and the article has been submitted by the students. The students was saying that university is not focusing on our careers, but they are focusing on their faculty careers. All of the faculty are busy in MS and PhDs, and they are not that much involved in with us. Like, अच्छा, वैसे let's, you know, what do you think दुनिया में हर किस्म की प्रॉब्लम चल रही है? What is the main problem that we are all talking about the same thing interesting? दुनिया में कहीं नहीं होता कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के एक शहर की यूनिवर्सिटीज के लोग बैठे हैं, they will have different things. But we, interestingly, have the same issues. The reason being, same organization on the top, because ये दुनिया की वाहिद एक मुल्क है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी पूरे मुल्क की हायर एजुकेशन पे चलती है. Nowhere in the world, neither in India, they have a UGC, उसको ऑपरेट किया, but it doesn't run the universities like the way we used to have a UGC. तमाम मुल्कों में होती है इदारे, but they do not run universities based on policy. आपको मैं सैन डिएगो की मिसाल देता हूँ, स्मॉल टाउन, ठीक है? वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज है सरकारी, एक है यूनिवर्सिटी ऑफ, एक यूसी सैन डिएगो जो सबसे बड़ी, बहुत बड़ी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उसके 8-10 कैंपसेस हैं. दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो है, यूएसडी, इन द सेम सिटी, ठीक है? आप, if you are a researcher and you like publications, you see San Diego. But if you are, you know, मेरी तरह के वैसे कमजोर से रिसर्चर और टीचिंग करना पसंद है, दूसरी तरफ चले जाओ, you will become a professor there one day. So universities have their own policy. So that's what I heard somewhere. Ke a good teacher cannot be a good researcher, and a good researcher cannot be a good Let's researcher. not use cannot, may not, May not be. Yes, we can say may not be. But if you find both of the qualities in one person, that's jackpot for the That's university, amazing. That's amazing. right? Because we know I personally like teaching. My colleague might not like teaching. She might like researching, sitting in a silent room and a dark room and working on a project. But that's a different thing. So this is what I told you that back in 2003, because I was trained by teachers who had studied, but they never told us what is research. They were teaching us. Yes. So we were getting ready for the market, and when we went for research, it was something new for us. So about Another ethical issue, sir, is I want to mention that in Pakistan nowadays, ऐसे कुछ लोग हैं जो पेड जर्नल हैं, उसमें पेपर आपसे पैसे लेते हैं, आपको कहते हैं फलां जर्नल में आपके पेपर पब्लिश करेंगे, मुझे जर्नल बता दें. वो जर्नल एक्चुअल जर्नल नहीं होते हैं, वो जर्नल एक्चुअल जर्नल नहीं होते, लेकिन जब आप देखते हैं तो वो जर्नल का नाम भी है, सब इसलिए आपसे एक लेसन पहले नहीं होते, पब्लिश कर दिया, लेकिन एक्चुअली वो जर्नल है ही नहीं है जो जिसने उसने पब्लिश किया है, वो क्लोन जर्नल होते हैं. अब इस दफा एचईसी एक नया सिस्टम ले गया है जेआरएस के अंदर के, जो हमें एक, चूंकि मैं इसी को वीडियो करता हूँ, तो उन्होंने हमें कहा है कि एक लिस्ट भेजेंगे, और उस लिस्ट में जो जर्नल है वो जर्नल का एग्जैक्ट अपना जो वेब पे साइट है, वहाँ पे एक बंदे ने पेपर क्लेम किया कि मेरा अपना जर्नल में पेपर पब्लिश है. जब आप ऑनलाइन, कोई आम बंदा ऑनलाइन देखते हैं तो कहते हैं वाकई तो पब्लिश है, लेकिन जब हम उस साइट से देखते हैं तो एक्चुअल वो जर्नल नहीं होता, उसी नाम से दूसरा जर्नल और वेबसाइट क्रिएट किया हुआ होता है, उसमें पब्लिश होते हैं, और आपसे 1 लाख रुपए भी लिए होते हैं. जब आपको पता चलेगा ये तो है नहीं, और वो आपके साथ झगड़ता भी है कि नहीं मेरा तो एक्चुअल जर्नल. Yes. और ये बड़ा कॉमन था. खैर उसमें ये है कि ये जो वेबसाइट की बात कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिशिंग के ऊपर थोड़ी बात करेंगे, किस तरीके से आपका डेटा लिया जाता है. ये फिशिंग का ही एक मेथड है, जो कंप्यूटर में हैकिंग होती है, उसी का एक मेथड है. बट यस, बट जर्नल्स में हम थोड़ा ये डूबियस और जर्नल्स पे ज्यादा डिस्कशन. लेकिन मेरा एक मास्टर कंप्यूटर साइंस में भी है, जो मुझे तो ध्यान रखता है इन चीजों को. अच्छा जी, रिविजन्स एंड रीसबमिशंस. अब इसके दरमियान में एक प्रोसेस होता है, रिव्यू प्रोसेस. मैंने वो स्किप कर दिया क्योंकि उसका कल डिटेल लेक्चर है, ठीक है. सो आई स्किप्ड इट. हम कल, क्योंकि वो इटसेल्फ इज अ साइंस, कंप्लीट साइंस. कल आप देखेंगे उस पर कितना काम हो रहा है, सिर्फ पीयर रिव्यूज के ऊपर, ठीक है. सो रिस्पॉन्स करना है हमेशा. थैंक द रिव्यूज एंड एडिटर्स फॉर द टाइम एंड कमेंट्स. एड्रेस ऑल पॉइंट्स रेज्ड बाय द एडिटर एंड रिव्यूअर्स.
Describe the major revisions you manuscript in your response letter. देखिए आपको जब वो रिव्यूअर आप सबको अगेन आया होगा, ठीक है, जब आता है तो हमेशा जो जो पॉइंट्स हैं उनको सेपरेटली आपने पेपर में तो चेंज कर दिया होगा ना, लेकिन आपने फिर सेपरेट पेपर जरूर लगा रहा है उस पर पॉइंट बाय पॉइंट पेज फला पैराग्राफ फला यहाँ पे जो चेंज था वो मैंने कर दिया, ये इस तरह करके सो ही कैन कंपेयर, अच्छा जी ये मेरा था, ये हो गया, सो इट्स मेक्स इट इजियर। बल्कि वो उसमें वो कहता है कि यार कुछ कलर दे दिया करो डिफरेंट कलर से, तो वो बड़ा अच्छा उसको नजर आ जाएगा। Perform any additional experiments or analysis the reviewers recommend. It happens, you know, they tell you, you know, ये experiment कम है, ये दूसरा कर लो, फला मॉडल अप्लाई कर दो, वो कर दो, ठीक है। If you think that's a good suggestion, well, go ahead with that. But it's possible that you already knew that. There was a reason you didn't do that. So it would not make the paper to provide sufficient explanation. So very politely tell them that, you know, you already knew that, but you didn't do it because this is the reason. तो जरूरी नहीं है कि जो वो कह रहा है बस वो कर दो। देखिए हमेशा हमने एक चीज ध्यान में रखी, research is not black and white. It's always the gray area. When it becomes black or white, it's out of the research. You know, जमीन बोल है, अब nobody is going to research about that because fact बन गया। तो जब तक फैक्ट नहीं बना वो ग्रे एरिया में, एंड पीपल कैन ऑलवेज हैव कॉन्फ्लिक्ट। दो रिव्यूअर्स हैं दुनिया में, जो नहीं कि वो हमारे साथ एग्री करें, ठीक है ना, सो दे कैन हैव देयर ओन थॉट्स। इफ यू आर कॉन्फिडेंट, योर सुपरवाइजर इज कॉन्फिडेंट, योर ग्रुप इज कॉन्फिडेंट, वेल जस्टिफाई दैट, ठीक है। प्रॉब्लम हमारा होता है कॉन्फिडेंस का। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, अगर हमने काम सही नहीं किया तो हम फौरन सुन ले, हाँ जी ये ठीक कह रहा होगा, चलो वो कर लेते हैं। Provide polite scientific rebuttal to any points or comments who disagree. Remember, if your manuscript is sent for second round of peer review, so जैसे मैंने कहा, एक तो वो एक्सपेरिमेंट्स है, अगर कोई नए डालता है वो करने हैं नहीं करने हैं उसको बताएं। कोई अगर उसने एतराज उठाया आपके काम पे और आपके नजदीक वो गलत, तो उसको आप पोलाइटली वो करेंगे कि I did it because this is the reason, this is the evidence behind it, ठीक है, justify your point. मेजर रिविजन्स में मैंने जैसे हाईलाइट करके, ठीक है, और विदिन जो टाइम है, क्योंकि टाइम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो जो भी टाइम है उसके अंदर उसको वापस कर दें। सो दिस इज द रिविजन वाला पार्ट किया दोबारा, और मेरा ख्याल है कि हार्डली एनीबॉडी वुड हैव गॉटन अनलेस वो वाला जर्नल हो जो फौरन ही एक्सेप्ट कर लेगा और कहेगा जबरदस्त आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया। अदरवाइज कोई जर्नल फर्स्ट उसमें नहीं करता, हमेशा कोई ना कोई रिविजन आपको देता है, which means that somebody is going through it, somebody is trying to. अच्छा जी, जैसे मैंने कहा जर्नल का एक सबसे पहला स्टेज होता है एडिटोरियल। पीयर रिव्यू जब आपका पेपर जाता है तो सबसे पहले पेपर एडिटर के पास जाता है, पहले वो देखेगा उसके बाद आगे आएगा, ठीक है। तो वो फर्स्ट स्टेज जो है ना फिल्टर का, वो वहां पर होगा। एडिटोरियल रिव्यू या रीजंस क्या होते हैं, स्कोप ऑफ द जर्नल में नहीं है, ठीक है, हमने देखा लेकिन हमने डाल दिया, चलो यार चल जाएगा, नहीं चला उसने वापस कर दिया, ठीक है। Not enough of an advance or enough impact for the journal, so the guys are reading it. अब वो ये देखना चाह रहे हैं कि यार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, हमारे जर्नल की वैल्यू बढ़ाएगा कि नहीं, ठीक है। Lack of proper structure, not following the formatting requirements, lack of necessary details for readers to fully understand, read the author's analysis and experiments. मुझे भी बात हुई थी, डिटेल्स नहीं होती, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स की बस डाल दिया और समझ नहीं आ रही कैसे रिजल्ट आ गया, रिजल्ट कहाँ से आ गया। Lack of up-to-date references or reference containing a high proportion of self-citations, another serious problem, ठीक है। अभी डिटेक्ट हो जाते हैं, पहले नहीं होते थे। अपने पेपर्स के आप जो ना साइटेशन बढ़ाने के लिए फिर उसमें डाल देते हैं, या अपने ग्रुप के लोगों के डाल देते हैं। Poor language, poor quality, difficult for logical presented data, or violation of some publication ethics जो हमने देखा है। What are the technical reasons? Incomplete data such as too small sample size or missing poor analysis, inappropriate methodology for answering the hypothesis, research motive is weak, or inaccurate conclusions. ये basically reviewer की तरफ से है। पेरेंट की एडिटर को ठीक नजर आया, उसने रिव्यूअर को भेजा, जब वो डिटेल रिव्यू करता है उसमें उसको मसले नजर आते हैं। बात जगह पे होता है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो आपको रिवीजन के लिए भेजता है। बात जगह पे वो इनकी वाली बात को उसको नजर आ रहा है ऊपर कुछ और एकदम रिजल्ट कहीं और चला गया, तो ये अंडरस्टैंड्स यार दिस इज समथिंग fishy. So a quality journal, a good journal is never going to take it further if it realizes कि यार इसमें problem, so they're going to reject it. And the good thing is
everybody gets rejections. If there is somebody who says कि नहीं जी मुझे नहीं हुआ तो वो या तो genius है या उसको सारे वो मिल जाते हैं जो है ना पैसे मिलते हैं because this is the rejection. You see, I have seen reviewers writing pages of pages reviewing your work, you know, which gives you an idea कि यार क्या क्या shortcomings है, how to improve, and especially when you are at the beginning of your career, the new writers, very you know excited होते हैं, ठीक है ना, उनको basically इसको positive लेना चाहिए, ठीक है ना कि negative लेना. This is a learning process. So reviewers अभी तक ने कहा कि तो आपका काम गलत है, लेकिन ये भी हो सकता है आपका काम बिल्कुल ठीक है, but reviewers do not agree with you because of your approach, whatever, you know, and they send it back or they reject it or submit it somewhere else. किसी और जर्नल में भेज दो. I did so many times, you know, एक conference reject करती है, दूसरे में भेज देते हैं, दूसरे में हो जाता है, ठीक है ना, because there's somebody else who's looking and who agrees with that. Unless and until there is fake data or there is dubious work or there is whatever is going on, if it's real work, somebody is going to accept it. You know, this is what I said. Okay. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks a lot. We've got at 5, आपको पता है, we have a session with Dr. Nancy Johnson and her peers. So tea break हमने कहा यहीं पे कर लेते हैं. बेहतर आप यहीं पे बैठ रहे हैं. हाँ, मैं नहीं चाहता कि आप लोग जाएं, अगर आप लोग आए तो मैंने उसको बोला है कि यहाँ वहाँ दो, तो ताकि जाने आने में फिर कहीं आप इधर उधर निकल जाए. 5 बजे का टाइम है, तो अगर हम उनको कह रहे हैं तो वो सारी बातें बुरा लगती है. तो